बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लेक्चरशिप इंटरव्यू से रिलेटेड मज़ीद कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट कंटेंट शुड एन आइडियल लेक्चर कवर, कि एक आइडियल लेक्चर के अंदर कैसा कंटेंट होना चाहिए। व्हेन asked in an interview you can say I believe an ideal lecture should cover clear learning objectives, clearly stating what students will learn, relevant context होना चाहिए, concise content होना चाहिए, engaging delivery होनी चाहिए, using varied teaching methods, visual aids and interactive elements, opportunities for practice होनी चाहिए, assessment और feedback होना चाहिए, conclusion और then next steps होने चाहिए. So the next question is what is non-linguistics communication? Non-linguistics communication refers to the process of conveying meaning and information without using language. For example, facial expressions, आपकी body language, posture, gestures, eye contact, tone of voice, touch, proximity and personal space, paralinguistic cues, pitch, volume, rate, pauses, non-verbal cues, icons, symbols, images, art and music. These forms of communication can convey emotions, attitudes and intentions and are essential in complementing linguistic communication. So the next question is what is Puritanism? If you have not subscribed my channel yet, kindly subscribe ASPPSC Guide and English Preparation, like the video and share with others. Puritanism is what? Puritanism was a religious and cultural movement in the 16th to 17th centuries that sought to purify the Church of England from its remaining Catholic elements and promote a more personal, devout and simple way of life. Puritans believed in personal salvation through faith and hard work, the authority of the Bible, simple worship and rejection of rituals, moral discipline and strict ethics, education and literacy. Puritanism had a significant impact on American history, culture and values, shaping the country's elderly development and identity. The next question is what is a conceit and which piety is associated with its use? Conceit is basically a literary device that uses an extended metaphor or analogy to make a complex comparison between two things that are not alike. It is often used to explore complex ideas or emotions in a unique and creative way. John Donne, that was a metaphysical poet, he is famously associated with the use of conceits in his poetry. His poems, such as The Flea and The Sun Rising, are known for their intricate and clever conceits that explore themes of love, death, and spirituality. The next question is describe 4 levels of Wordsworth's poetic creation. William Wordsworth's poetic creation can be described in 4 levels. आपको इस चैनल पर पीपीएससी और एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं. काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू मे रिसीव ऑल द वीडियोस. ऑब्जर्वेशन, आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक क्रिएशन में क्या चीज़ें मिलती हैं 4 लेवल्स में? ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन एंड देन एक्सप्रेशन. हु वर द मार्शियन पोइट्स? मार्शियन पोइट्स कौन थे? द मार्शियन पोइट्स वर अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश पोइट्स, मोस्ट नोटेबली क्रेग ग्रेन एंड क्रिस्टोफर रीड, हु रोट इन अ स्टाइल दैट डिस्क्राइब्ड एवरीडे थिंग्स इन अ स्ट्रेंज वे. उन्होंने एवरीडे थिंग्स को स्ट्रेंज वे में लिखा एज इफ दे वर बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय अ मार्शियन विजिटिंग अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम. This style was characterized by vivid imagery, unexpected comparisons, and a sense of defamiliarization, making the familiar seem strange and new. Who were the Georgian poets? Georgian poets जो थे वो group of British poets थे जिन्होंने early 20th century में लिखा and were known for their lyric poetry. Some notable Georgian poets include Robert Graves, Edmund Charles Blundell, D.H. Lawrence, Siegfried Sassoon, Walter de la Mare, Rupert Brooke, Ralph Hodgson, and John Drinkwater, Leslie Abercrombie, James Elroy, Flecker, Wilfred Wilson, Gibson. The next question is Ending of A Doll's House. Ending of A Doll's House by Henry Gibson sees Nora, the protagonist, leaving her husband and children to pursue her own desires and independence. आपने देखा होगा कि जब आपने डॉल्स हाउस प्ले पढ़ा है कि वो एट द एंड क्या कहती है अपने हस्बैंड से कि मेरे बाप ने भी मुझे हमेशा डॉल ही समझा और आप भी वही कर रहे हैं. सो शी लेफ्ट द हाउस. The protagonist, leaving her husband and children to pursue her own desires and independence, she realizes that she has been treated like a doll or a toy by the men in her life and decides to take control of her own life. The next question is what is Coleridge's philosophy? Samuel Taylor Coleridge's philosophy was largely influenced by German idealism and British romanticism. किस चीज़ से इंस्पायर्ड थी? उनकी इन्फ्लुएंस
थी, उनकी जो फिलासफी थी जर्मन आइडियलिज्म और ब्रिटिश रोमांटिसिज्म से। उसके जो की एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली वो ये हैं: इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड इट्स रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी, शेपिंग रियलिटी, द वैल्यू ऑफ नेचर एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ इट, द बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर, द एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल्स इमोशनल एंड इंट्यूटिव रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड रिस्पॉन्स, द आइडिया दैट द ह्यूमन माइंड इज एक्टिव इन शेपिंग आवर understanding of reality. Coleridge's philosophy is often described as a form of romantic idealism. The next question is name some Russian writers. Russian writers में जो है हमारे पास ये नाम आते हैं: फ्योडोर दोस्टोयेव्स्की, लियो टॉल्स्टॉय, मिखाइल बल्गेकोव, एंटन चेखव, बोरिस पास्टरनिक, इवन टर्गेनेव, निकोलाई गोगोल, और ये सारे जो हैं ये हमारे पास रशियन राइटर हैं। The last question of this video is salient features of novels of Hardy. थॉमस हार्डी के जो novels हैं उनके salient features कौन कौन से हैं? रीजनल सेटिंग है उनकी, वेसेक्स, a fictional region based on Dorset and surrounding areas, pessimism and tragedy, characters struggling against circumstances and fate, नेचुरलिज्म दिखाया गया, emphasis on environment and the natural world, social class, explorations of class divisions and social mobility, fate and chance, critique of society, romanticism. I think so मज़ीद भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए इस वीडियो में जितने भी हैं इस लेक्चर में। So the 307 question is, do you find existentialism in the novels of Hardy? Yes, Thomas Hardy's novels जो हैं वो exhibit करते हैं existentialist themes को, such as individual struggle against fate and circumstance, emphasis on human freedom and choice, absence of divine intervention or moral absolute, focus on human existence and experience, characters search for meaning and purpose, awareness of mortality and the human condition. The next question is, what do you know about the Wasteland? Wasteland जो है basically that is a poem written by Thomas Stearns Eliot, published in 1922, and that is widely regarded as one of the most important English language poems of the 20th century and a central work of modernist poetry. इसके जो key facts हैं कुछ poem के बारे में हम बयान कर देते हैं. Poem is divided into 5 sections. It does not follow a single narrative or feature a consistent style or structure. Poem जो है वो shifts करती है between voices of satire and prophecy. It features abrupt and unannounced changes of narrator, location and time. The poem employs many allusions to the Western canon, including Ovid's Metamorphoses, The Legend of the Fisher King, Dante's Divine Comedy and Chaucer's Canterbury Tales. So ये कुछ चीज़ें थी जो कुछ फैक्ट्स थी हमने बताया. What is the meaning of your name? For example, my name is Aksa. So Aksa means the farthest. आप अपने नेम से जो है वो देख लेंगे. Has your name appeared in any verse? Yes, my name is appeared in the verse Surah Al-Isra. Then after this, how to write a good essay? To write a good essay, understand the prompt. हमें prompt को understand करना चाहिए. Clearly grasp the question or topics. Research and plan. Gather information. Organize ideas. एंड क्रिएट एन आउटलाइन. इंट्रोड्यूस जो है हमने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है, थीसिस की स्टेटमेंट देनी है, बॉडी पैराग्राफ्स देने हैं, लॉजिकली डेवलप आर्ग्यूमेंट्स विद एविडेंस एंड एनालिसिस, कंक्लूजन देना होता है, एडिट एंड प्रूफ रीड करना होता है. व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस बेसिकली इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया और क्लेम ऑफ अ पैराग्राफ. यूजुअली इट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ. It sets the tone and direction for the rest of the paragraph, provides a clear and concise summary of the paragraph's content. The next question is difference between a topic sentence and a thesis statement. अब टॉपिक सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ को. इट इज स्पेसिफिक टू द पैराग्राफ. इट गाइड्स द रीडर थ्रू द पैराग्राफ. थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है? इट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ द इंटायर एसे. स्पेसिफिक टू द एसे, गाइड्स द रीडर थ्रू द इंटायर एसे. थिंक ऑफ इट लाइक अ मैप. टॉपिक सेंटेंस जो है ये एक लैंडमार्क है ऑन द मैप, पैराग्राफ लेवल है. थीसिस स्टेटमेंट जो है ये ओवरऑल रूट है, एसे लेवल है. So the next question is, what is grapevine communication? Grapevine communication basically refers to informal, unofficial and unstructured communication channels without an organization. Rumors, gossip and unverified information spread through personal networks, often used when formal communication channels are lacking or ineffective. It can be accurate or inaccurate and may spread quickly. Examples may water cooler conversations, whispers in the hallway or social media chats about workplace rumors or news. The next question is, in which wave of feminism are we living? हम जो present जो wave है वो चल रही है. The present day is considered to be in the 4th wave of feminism. This wave began around in the early 2010s. The 4th wave seeks greater gender equality by focusing on gendered norms and the marginalization of women in society. It tackles issues such as sexual abuse, sexual harassment, sexual violence, the objectification of women, sexism in the workplace. The next question is, what is stylistics? Stylistics is basically a
study of style that refers to the personal style, individual author style. A linguistic approach to literary analysis, it studies the language and style used in literary texts. It examines how language choices create meaning and effect. It analyzes literary devices such as metaphor, imagery and syntax. In short, अगर हम बात करें तो स्टाइलिस्टिक जो है वो एक्सप्लोर करता है कि हाउ द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल मीनिंग एंड इम्पैक्ट. So the next question is difference between stylistics and criticism. स्टाइलिस्टिक जो है वो एनालाइज करता है लैंग्वेज और लिटरेरी डिवाइसेस को जो कि एक टेक्स्ट में यूज़ की गई हैं. एग्जामाइन करता है हाउ द टेक्स्ट इज रिटन, इज स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज चॉइसेस. फोकसेस ऑन द टेक्सचुअल फीचर्स एंड देयर इफेक्ट्स. क्रिटिसिज्म क्या होता है, ये इवेल्यूएट करता है टेक्स्ट के मीनिंग को, थीम्स को और सिग्निफिकेंस को. इंटरप्रेट करता है टेक्स्ट के कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को. So the next question is I am no Prince Hamlet. What does Prufrock say this? ये जो है आई एम नो प्रिंस हेमलेट और जेलफ्रेड प्रूफरॉक ने बोली हैं, ये लाइंस टी.एस. एलियट ने लिखी हैं. आई एम नो प्रिंस हेमलेट ये इंडिकेट करती हैं दैट ही इज़ नॉट अ हीरो एंड डज नॉट हैव द करेज एंड कॉन्फिडेंस ऑफ हेमलेट. ही इज़ कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू हेमलेट हु इज़ अ कैरेक्टर फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले ऑफ द सेम नेम एंड स्टेटिंग दैट ही इज़ नो मोर लाइक Polonius, a minor character who is an easy tool and almost ridiculous. Is language dynamic? Yes, language is dynamic. Because it changes over time, diachronic change, it varies across regions and cultures, synchronic change, new words, meanings and uses emerge, neologisms, semantic shift, old words and uses fall out of favor, obsolescence, and language adapts to technical, social and cultural advancements. Language is constantly evolving, adapting and transforming to reflect the needs and context of its user. What is descriptive writing? Descriptive writing क्या होती है? That is a style of writing that vividly describes a person, place, object or experience. It uses sensory details, sight, sound, smell, taste, touch to create a mental image. It aims to engage the reader's senses and imagination, often uses figurative language. Metaphors, simile, adjectives or to paint a picture with words used in various genres. So the next question is explain reader response theory. A reader response theory जो है RRT is a literary theory that suggests the reader's response to a text is more important than the author's intention. The reader brings their own experiences, beliefs and biases to the text. The meaning of the text is created by the reader's interaction with it. Different readers may have different interpretations of the same texts. Okay. So the next is how to teach poetry in class. Poetry जो है क्लास में किस तरह से टीच की जाए, पढ़ाई जाए. To teach poetry in class, consider the following approaches. Immerse students in the poem, contextualize the poem, analyze structure and form, make connections, encourage creative process. The next is explain about a 16 line sonnet. 16 line sonnet जो है ये type of poem है that consists of 16 lines divided into 4 quatrains, 4 line stanzas. Specific rhyme scheme A B A B C D C D E F E F G G. Typically written in iambic pentameter 5 feet per line with an unstressed syllable followed by a stressed syllable. It explores a single theme or idea with a turn or volta in the third quatrain. So the next is if we swap Macbeth with Othello, there will be a tragedy or not. If we swap Macbeth with Othello, there would still be a tragedy because Macbeth and Othello are both tragic heroes who suffer from flaws, ambition and jealousy respectively, and that lead to their downfalls. The circumstances and plots of the two plays are different, but the essential elements of tragedy remain: a heroic figure with a fatal flaw, a series of events that lead to tragic consequences, a sense of inevitability and fate, exploration of human nature and the consequences of action. The next question is differentiate between existentialism and absurdist. ये दोनों के रिलेटेड हैं बट डिस्टिंक्ट फिलोसफीज हैं दोनों की. एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस पे. इसका जो फोकस होता है वो ह्यूमन कंडीशन, एग्जिस्टेंस और ऑथेंटिसिटी पे होता है. ये इंकरेज करता है इंडिविजुअल्स को टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चॉइसेस एंड क्रिएट देयर ओन मीनिंग इन लाइफ. और ये ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, एम्फसाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल एंड जबकि एब्सर्डिज्म जो है ये एम्फसाइज करता है एब्सर्डिटी एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ये फोकस करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटीज डिजायर फॉर मीनिंग एंड द अपरेंट इंडिफरेंट ऑफ द यूनिवर्स. The next is what is the epic theatre. Epic theatre is a theatrical movement that emerged in the early 20th century, characterized by a focus on the audience's perspective and reaction. Techniques that deliberately cause the audience to engage in a different way. It presenting a series of loosely connected scenes that avoid illusion, often interrupting the story line to address the audience directly. Associated with the dramatic theory and practice evolved by Bertolt Brecht. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा.